Hi guys, welcome back. Is this live? Is this working? I'm not able to hear the audio. I'm not able to hear the audio. I'm not able Okay, to it's hear the working. audio. I'm not able Okay, to hear it's the working. audio. It's working. All right, great. Welcome back to the stream, guys. आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं आगे के ये 3 questions. We don't have work tomorrow, so we can take our goddamn time like we always do. And then maybe we'll also dig into this issue in Superbase auth. Well, I'll set it up and then maybe I'll take a look into what this problem is. But before that, let's dig into the code forces and let's get going. Everybody like good arrays. No, I don't. I hate them. Yep, that looks good. Actually, I want to keep my problem here and the code here. Live streaming at the last. That looks good. All right. So नाम है इस problem का make. Sorry. What was the name? Everybody likes good arrays. Everybody likes good arrays. Java. Some boilerplate code for you. Name that please. All right. Let's go ahead and start the timer. Okay, क्या कह रहा है question? An array A is good if for all pairs of adjacent elements AI and AI plus 1 uh, are of different parity. Note that an array size 1 is trivially good. You are given an array of size n, one operation you can select any pair of adjacent elements in which both elements are of the same parity, delete them and insert their product in the same position. Find the minimum number of operations to form a good array. So different parity is kind of basically like it should be odd and even, right? We'll figure it out from this note that we've been provided here. Consider the first test case, select the second and the third integers and apply the operations on them. Second and third, हाँ यहाँ पे दोनों e odd पे हैं. So like we have this odd and then we have these two as odd as well. And then हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लिया एंड उसको इंसर्ट किया देन वी अगेन हैव द सेम प्रॉब्लम दैट both of them are of the same parity. So we do one thing and we take both of these elements and we multiply them and we get 77. तो यहाँ पे जब 77 आ गया odd even odd that means हमें लगे दो operations और ये है minimum number of operations that was required. Now uh, the the first case that we saw was this. Let's move on to the second case, which doesn't require any operations because पहला नंबर देखो even है कि odd है second number even है कि odd है even है then odd then even. Therefore this is a very good array. Third में हमें operations करने पड़ेंगे, so let's do that. Let's open its carry draw. And then let's do it. One, triple one, two, two, three. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास and let's try to do some dry run on this, right? कि हम algo के हिसाब से चलेंगे, not like कि we're jumping from one step one to step n, right? हम एक एक करके चलेंगे ताकि हमें अपनी mental clarity मिल जाए about the algorithm. That is right. ओके तो यहाँ पे हमारे पास वन दिया है वी चेक द एडजेसेंट भाई यहाँ पे तो दोनों सेम पैरिटी में है तो वी टेक देयर मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी राइट द होल अरे अगेन सो इट बिकम्स दिस राइट
साइज कम हो गया. 1 and 1, then again same thing. So we take the product and we write the uh, rest of the array. ना आपने हम चेक किया ये तो सही है, हमने ये चेक किया ये तो गलत है, तो इसका हमने प्रोडक्ट लिया तो ये 4 हो गया. जो पहले का एरर था वो तो वैसे अनचेंज रहेगा, एंड देन जो बात का एरर है वो भी अनचेंज रहेगा, जो हमने बस इन दोनों को प्रोडक्ट लेके यहाँ पे डाल दिया. नाउ इफ़ वी चेक और एक्चुअली हमें यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिंस वी मूव टिल 1 पॉइंट, अगर हम पैरिटी देखते ही हुए आ रहे हैं तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम इट. तो 4 और 3 बस हमें नेक्स्ट एलिमेंट देखना है. द पैरिटी इज़ गुड, दिस एरे इज़ गुड. हमें कितने ऑपरेशंस लगे? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, एंड देन दिस इज़ 3. सो वी टुक 3 टोटल ऑपरेशंस फॉर दिस. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसका आंसर 3 आना चाहिए, जो कि आ रहा है. ओके, सो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस लॉजिक इनटू कोड? फर्स्ट लेट्स डू वन थिंग. जो इनपुट दिया हुआ है हमारे पास, we will go ahead and just write that input in code logic. First line of each test case contain an integer n. So let's take that input n. uh, यहाँ पर मैं एक फास्ट रीडर को यूज़ कर रहा हूँ. सो बेसिकली अ बफर रीडर, and then I mean it's a bit faster compared to your normal system.in, you know, scanner library. It's a bit faster than that in Java, and it basically just takes string, and then we are just uh, taking those input as string, and then we're returning it as, using the parse function. We're just returning the required uh, type that we want, right? तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया, बट यहाँ पर हमारा जो बफर रीडर है दैट विल टेक इन अ स्ट्रिंग ऑफ दैट n. सो अगर 5 है, सो व्हाट इट डज इज, लाइक अगर हमारे पास 5 है, so it will sorry, not like that. अगर हमारे पास 5 है, so it will take input like this, and then we will again parse it. And believe me, ये जो हम इतना verbose पहले input ले रहे हैं string में, and then converting it again into the type that we want, this is still faster in Java compared to those kind of libraries that we have. So yeah, now what we want is that what do we have? The output, the second line of each test case contains the array. So let's take the input as well. But wait, like कभी कभी क्या होता है, we don't really need to take, like we don't really need to store the whole array into memory. Uh, we can take the input, and then we can, uh, do stuff on that वैसे ही, like लेते समय. So like that is some space optimization that does. But let's see अगर यहाँ पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या चाहिए? मैं एडजेसेंट एलिमेंट ही चेक कर रहा हूँ. तो मेरे को एडजेसेंट एलिमेंट ही चेक करने हैं, तो मेरे को बस प्रीवियस और करंट चाहिए. तो अगर मुझे बस प्रीवियस और करंट चाहिए, तो फिर मैं क्यों स्टोर करना चाहूँगा एक उसको, क्या कहते हैं, एक एरे को. लेट्स सी. सो यहाँ पर अगर मैं एंड प्रीवियस कर दूँ, जिसको मैं अभी -1 असाइन कर देता हूँ, एंड करंट कर दूँ, इसको मैं भी -1 असाइन कर दूँगा. प्लस. ओके, तो हमारा पहला इनपुट जो होगा इसमें वो प्रीवियस में जाएगा, एंड देन जब प्रीवियस फिल्ड हो जाएगा, देन वी वुड वांट टू only, update previous and take the input and current. So actually what we can do is we can just take uh,
the current and get the value in that, and then if previous is equals to -1, we will just assign previous is equals to current. So that will handle the case where I equals 0 होगा, तो हमेशा previous to -1 पे initialize रहेगा, then we'll give it the previous value. तो अब वहाँ पे हम next क्या कर सकते हैं, अब हमें चेक करना है parity, right? अब हम I equals 1 पे आ चुके हैं, for I equal 1 to n, right? हम इस केस पे आ गए. अब what we have to do is we have to check wait, हमने प्रीवियस केस ढंग से हैंडल किया कि नहीं, करंट और इसको मैं को यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना होगा, राइट? सॉरी, हाँ करेक्ट, कंटिन्यू करना होगा बिकॉज आई वांट टू स्किप this current iteration because I don't want to enter the I equals 1 part of the logic, right? अगर मैं वहाँ पे कंटिन्यू ना डाल के else भी डाल दूँ, then that also works, to be honest, and I think that might look much cleaner as well. तो यहाँ पर मैं else डाल देता हूँ. ओके, अब यहाँ पर मेरे पास करंट है और मेरे पास प्रीवियस है, और मेरे को क्या देखना है, पैरिटी देखना है दोनों में, और मेरे को एक फाइनल आंसर भी तो चाहिए होगा इन नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू 0. करंटली तो 0 ही रहेगा स्टार्ट में. एंड देन अब मेरे को चेक करना है साइज ऑफ, अभी मैं करंटली क्लीन कोड बाय मार्टिन पढ़ रहा हूँ, रॉबर्ट सी मार्टिन. So you know, inspiration, taking inspiration from that and applying it here. No very ambiguous variable names, keep it very precise. Okay, अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हमें चेक करनी है पैरिटी. तो पैरिटी के लिए तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, एक मॉड्यूलस ऑपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर x मान लो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 होता है, देन दैट इज इवन. एल्स, अगर एल्स मतलब अगर ये ट्रू नहीं है एंड मान लो कोई रिमाइंडर दे रहा है, देन वो ऑड है, राइट? तो अब हमको क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई प्रीवियस हमारा इवन था कि ऑड था, और करंट हमारा इवन है कि ऑड है. अगर वो मिस मैच हुआ तो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा, and then we will, in the previous one we will store this product and then we'll move on to the next iteration. तो वैसे वैसे वो चलता रहेगा. और अगर सॉरी इफ मिसमैच होता है then we will skip, we won't be doing any operations. but अगर मैच होते हैं, दोनों की सेम पैरिटी है, then we will store प्रीवियस में अपना प्रोडक्ट जो हमने किया था करंट और प्रीवियस का, एंड हम करंट को मूव कर देंगे नेक्स्ट इटरेशन पे, राइट? सो ये हमारा प्लान है. ओके, तो अब यहाँ पे हम पहले क्या चेक करते हैं, लेट्स डू द इजी बिट. तो अगर हमारे पास, व्हाट इज़ हार्डर हियर, हमें अपडेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा अगर मैच होता है तो दैट बिट इज़ हार्डर, राइट? तो हम एल्स ब्लॉक में डालना चाहेंगे. तो वी विल राइट इन द इफ ब्लॉक कि अगर हमारा प्रीवियस मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो यहाँ मेरे को थोड़ा सा बड़ा सा रखना पड़ेगा, previous modulo 2 is not equal to 0, and current modulo 2 is equals to 0, or the opposite case, like previous modulo 2 is equals to 0, and current modulo 2 is not equal to 0, right? तो even odd even, अगर ऐसा केस है देन वी जस्ट से हमको प्रीवियस को अपना करंट असाइन करना है, प्रीवियस को करंट असाइन करना है, एंड वी नीड टू जस्ट मूव ऑन, सो वी नीड टू जस्ट कंटिन्यू. एल्स हमारा मैच हो रहा है
Then what we have to do is we have to assign previous with the value of current into previous, right? That's not into, that is into, ये हमको assign करना है, and then what we need to do is we need to continue again. तो हमें को continue लिखने की ज़रूरत है नहीं, because I'm in an if else block, right? तो यहाँ पर ये हो गया, and I think मैं जब ये करूँगा तो मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर ये बढ़ गया, एंड देन मेरे को बस लूप से जब मैं बाहर आऊँगा तब मुझे बस सिंपली आउट डॉट प्रिंट, डू वी हैव टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही प्रिंट करने, ओके, देन इज जस्ट अ सिंपल आउट डॉट प्रिंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, एंड दैट शुड बी इट, होपफुली, लेट्स सी। इनपुट लिया हमने एंड इनपुट पेस्ट किया यहाँ पे, लेट्स सी, 20203, beautiful, it's working correctly. uh, ओके, मेरे को सबमिट करने के लिए ना ये system डॉट सेट इन एंड system डॉट सेट आउट हटाने पड़ते हैं, बिकॉज द जज डज नॉट नो दैट, एंड द जज ओनली टेक्स मेन the files which have functions that start with a public class of main, right? So let us save it like that, and then let's go and submit this. कहाँ पर है ना, अरे मैं अपने पीसी में ही गुम जाता हूँ कहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। आई थिंक इट्स प्रोजेक्ट्स क्लाउड फोर्सेस 800, एंड देन मेन से सेव हो गया था वो। लेट्स सी, yeah, this is the file. Let us submit, let's see what happens. This time 15 minutes, let's see. Thank you. Okay, there we go. Running on test case 1. क्या ऐसी कोई कंडीशन थी जो हमने मिस कर दी थी? बहुत टाइम ले रहा। अरे भाई इतना टाइम, सो गया क्या तो फोर्सेस आज? रनिंग ऑन टेस्ट केस 1. हेलो हेलो हेलो, ये क्या हुआ? ओह, आई कैन शिफ्ट दिस, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। वर्ड का हमेशा पहले रखो, देन प्रॉब्लम को, देन टाइम को, मेमोरी। तो भाई क्या है, मेमोरी तो बहुत ही लेता है ये। अरे क्या दिक्कत है भाई, क्या अटक गया यार ये, मतलब क्या ही बोलूं भाई, मैं सो जाता है यार ये। हेलो, अरे भाई आई हेट दिस भाई, क्यों सच अ बिग साइट?
जज तो दिखा रहा है कि जज तो हो चुका है. ओह माय गॉड ब्रा, इतने टाइम में जज हो गया था तो इतना अटका क्यों था भाई तू. सॉल्व. ग्रेट. ग्रेट स्टार्ट गाइस, 15 मिनट्स में एक क्वेश्चन हो गया एंड फर्स्ट ट्राई. we're moving somewhere in the world. Now see how the next questions takes the cake. एक्सट्रीम, क्या था नाम, एक्सट्रीमली राउंड. एक्सट्रीमली राउंड, आई गेट इट आई थिंक. मे बी आई डोंट नो. डू आई गेट इट? प्रोबेबली नॉट. ठीक है. सो एक्सट्रीमली राउंड, लेट्स सेट इट अप अगेन. यूजुअली एक्सट्रीमली राउंड. अच्छा, आप यहाँ पे क्यों खुल रहे हो भाई साहब? अरे आप मेन ही क्यों रह गए? Yep, that's good enough. We can close you, close you, we can close you, we can close you, we can close you, we can't close you, we can close you. We can make you, actually we can close you as well. CP-31. Brilliant. ओके, इतना तो मैं स्पेस लेने की ज़रूरत है नहीं. तुम नीचे आ जाओ भाई. दैट्स बेटर. साथ साथ दिखो एंड तुम बंद हो जाओ भाई. ठीक है, अब हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइमर. Alright, what the question is saying is, let's call a positive integer extremely round if it has only one non-zero digit, which means 5004 single digits or multiple zeros and one integer which lies between 1 and 9 are extremely round integers. Or not. You are given n, you have to calculate the number of extremely round integers such that 1 is less than equal to x is less than equal to n. तो हमें 1 से लेके n तक जाना है एंड हमें सारे क्या कहते हैं राउंड फिगर्स बताने हैं. ओके ओके, दिस इज लाइक प्योर मैथ. देयर इज लाइक, ओके वेट, कंस्ट्रेंट्स देखे तो हम लूप भी लगा सकते हैं. ith contains one integer. एक दो तीन चार पाँच छः. ओ मे बी हम लूप लगा सकते हैं इजीली शायद. देखो, जो के पहला इनपुट है 5. 5 का 9 कैसे? 5 हमें इनपुट में मिला है. सो what does this mean? The description of the ith test case. I mean, टाइम लिमिट 3 सेकंड की दे रखी है तो मतलब दे आर वेरी एक्सट्रीमली जनरस. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इन दिस क्वेश्चन, बट लाइक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ओह ओह माय बैड, दैट इज फॉर हॉरिबल मिस्टेक. सो पहला जो है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है. सो डोंट बी डम लाइक मी. That is for the number of test cases. These are the test cases. For the initial 9 numbers, we will print 9, and the rest of them we just, you know, 42 तक जाओगे तो सिर्फ 13 ही मिलेंगे. और so like what, 10 and then 20 and then 30 and then yeah, that's it. Oh, great, 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 great. Awesome, awesome. I mean, देखो, if it has a 0 then it is divisible by 5. एंड पहले के 5 9, पहले के 9 तो हैं ही हमारे पास. सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स टेक दैट इनपुट. पहले हम वो इनपुट ले लेते हैं. देन लेट्स डू इट लाइक दैट कि
if n is equal to 9, I don't know, equal to 9 है तो out dot print ln 9, why is this issue, why is this an issue, and then if else, I mean रुको, if n lies between, if n is greater than equal to 1 and then n is less than equal to less than 10, then r dot print ln 9, right, क्योंकि भाई सॉरी n n n n, क्योंकि जितना हमें नंबर दिया है हम उतने ही नंबर प्रिंट कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 9, and then after that we can just decide कि डिसाइड क्या मतलब, वी कैन से कि भाई मॉड्यूलो लो फॉर int I equals to 1, 1 क्यों ही करना, 1 क्यों ही करना, आई मीन हमें सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ जीरोस ही तो ऐड करने हैं, 1 क्यों ही करना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है until that numbers becomes greater than the n we have been provided. So अगर हमें इसमें नहीं मिल रहा, अगर हमें इसमें नहीं मिल रहा तो मतलब वो 10 या 10 से बड़ा नंबर है, राइट, तो हम क्या काम करते हैं, हम ले लेते हैं int temp इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, temp सॉरी ये हमें while लूप के अंदर करना है, while n is greater than 10, इक्वल टू भी मान सकते हैं, इक्वल टू इक्वल टू मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, मार सकते हैं, int temp इज इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें करना है मल्टीप्लाई, 10 10 10 से मल्टीप्लाई, इफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन हमें क्या करना है, प्रिंट भी करना है क्या, हमें प्रिंट नहीं करना, हमें बस ऐड करते जाना, काउंट, काउंट को हम 9 से इनिशलाइज रखेंगे और यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे, जब यहाँ पे हो जाएगा, ओ वेट वेट वेट, वाइल लूप में नहीं एल्स में ही, जब ये हो जाएगा मतलब प्रिंट कर देंगे हम काउंट, आई थिंक दिस शुड वर्क, इतना ओवर द टॉप ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं मुझे लग रहा, लेट्स सी पहले मैं एक बार देख लूँ, इन टेम्प इक्वल्स टू 1 है, 1 into 10 बन जाएगा, देन ओके वो 100 हो जाएगा, लेकिन ओ ओ ओ ओ ओ ओ मुझे कैसे चाहिए, मुझे एक लूप ही लगाना पड़ेगा, मैं लूप ही लगा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, फॉर लूप ही लगाना पड़ेगा गाइस यहाँ पे मुझे, फॉर इन आई इक्वल्स 10 से ही स्टार्ट करते हैं, and then I less than n, I uh, 1 से ही स्टार्ट करते हैं, I into I equals to I into 10, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 into 10, फिर 2 into 10, फिर 3 into 10, तो वैसे रहेगा, एंड यहाँ पे बस मुझे काउंट को बढ़ाते जाना है, एंड यहाँ पर मुझे काउंट को 0 इनिशियलाइज कर देना है, तो ये मेरा काम हो जाएगा, ये देखते हैं, ओके नहीं, काउंट को 9 से रखना है भाई, एंड नाउ इफ वी डू इट वी गेट
10, 90, wait what, 13, 13 के लिए क्या आ रहा है इसके पास, 9 is 9, 42 is 13, 42 is 11, why? uh, 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 9 तक हमने कवर किया, उसके बाद फिर हमारा 10 आया, 10, 10 आया, 10 हमने कवर किया, 10 इज, ओ ओ वेट 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 वेट, ये मल्टीप्लाई बाद में कर रहा है ना, ये मल्टीप्लाई बाद में कर रहा है। I equals 1 while I is less than n, I is equals to I into 10, plus plus, I को 10 से ही स्टार्ट करो। नहीं यार, मेरे को एक और वेरिएबल रखना पड़ेगा, इन जंप से, जंप में 10, अरे यार इतना सिंपल लॉजिक है, फोपड़ा क्यों नहीं चल रहा मेरा। int I equals 0, 1, why am I saying I equals 1, jump equals, why should I store a constant in a variable if it remains a constant like it doesn't, मैं कंपेयर ही गलत चीज़ को कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, नंबर को मुझे अपडेट करना है और मैं इंडेक्स को भी अपडेट कर दे रहा हूँ, दैट इज एन इशू दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ। ith पे मेरे को वो नंबर चाहिए, राइट, तो अगर मेरे को वो नंबर जनरेट करना है, नंबर, क्योंकि मेरे को n ही मिल रहा है ना यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नंबर को कंपेयर करूँगा, int नंबर, अरे यार रुको रुको, मैं, let's do it from the start, let's do one thing, let's draw, ड्राइंग से ज़्यादा पता चलेगा, लेट्स टेक 13 फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके, हमारे पास काउंट इक्वल 9 तो है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इफ लॉजिक, तो हमारे पास 9 आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, हमें पता करना है कि भाई 9 के बाद इसमें 10 आता है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट नंबर आता है 20 इस सीरीज़ में, ठीक है, तो बेसिकली एक आई इंटू इक्वल टू 10 का प्रोग्रेशन है, तो हमें ये वाला लॉजिक तो चाहिए, अगर फॉर एनी नंबर दैट लाइज बिटवीन 10 एंड 9999999, यू नो, तो उसके बीच में है, तो हमें ये तो चाहिए, ठीक है, बट ये आय नहीं होगा, ये आय नहीं होगा, ये क्या होगा, या फिर ये आय भी हो सकता है, हमने ये नंबर जनरेट किया
आई इक्वल्स 1 into 10 से, तो आई यहाँ पे 10 हुआ। हमने कंपेयर किया n से, n से कंपेयर किया तो ये ट्रू है, तो हमने काउंट को प्लस प्लस कर लिया। फिर हम गए नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारे प्रोग्रेशन में क्या आता है 20। फिर हमने 20 से कंपेयर किया आई इक्वल्स को, बट यहाँ पर वही है कि मैं 10 को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ना। फॉर लूप में क्या होता है कि व्हेन यू इनिशियलाइज इट चेक्स विद द इनिशियलाइज्ड वैल्यू, राइट? और डज इट नॉट? नाउ दैट इज अ वेरी ग्रेट फाउंडेशनल क्वेश्चन दैट आई नीड क्लैरिटी ऑन। तो चेक करते हैं गाइस, प्लॉट से पूछे जावा डॉक्स ऑन फॉर लूप। आ जाओ, जावा डॉक्स ही खोल लेते हैं गाइस। प्लस 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 प्लस, उसको बढ़ाऊंगा। राइट, initialization, termination, increment. The statement for statement provides a compact way to iterate over range of values. Programmers often refer to it as a for loop because of the way in which it repeatedly loops until a particular condition is satisfied. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है, the initialization expression initializes the loop. It executes it's executed once as the loop begins. When the termination expression evaluates to false, the loop terminates. The increment expression is invoked after each iteration through the loop. It is perfectly acceptable for this expression to increment or decrement a value. ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन था कि इन्फिनिट लूप के लिए हम ये कर सकते हैं, एंड देन ठीक है, ये सब तो ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ से इतना जवाब मिला नहीं है सच, प्लॉट से ही पूछ लेते सीधा सीधा। हाय, आई हैव अ क्वेश्चन। When the loop is initialized, why am I even like, I can test it right here. Uh, let's say I have for int I equals 1, I less than 1, I plus plus, out of print in the loop. Let's run this. Empty, empty, right? Empty. So it does evaluate the expression, and if I do it too, and then it will wait. Is it failing or something? Uh, why is this not? Oh yeah, yeah, there it is. Oh, wait, that isn't. Wait. Save that. Huh. Yo, what? Oh, I said 5 times now. Yeah, let me just make that one. Yeah, that makes sense. That makes a lot of sense. So हमारा expression initialize होता है and then termination condition check होती है. Oh my God भाई, जो भी मेरा स्ट्रीम देख रहा होगा, थैंकफुली कोई नहीं देख रहा होगा, बट जो भी देख रहा होगा क्या बोलेगा भाई, क्या चल रहा है ये? ओह गॉड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, आ जाओ इधर, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो अपना कहाँ पे थे हम? हमको इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब, हमारा इंक्रीमेंट वो लूप कंप्लीट होने के बाद ही होता है इंक्रीमेंट, ठीक है? और वो जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। अगेन रिडंडेंट कमेंट्स तब से। तो मेरे को करना क्या चाहिए यार?
एक्चुअली मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को लूप को चलाना चाहिए। टेन से मल्टीप्लाई करते जाना है मुझे ये ऑपरेशन, बस वन से स्टार्ट करके let's say n तक जाना है। तो जाओ ना, इसको बढ़ाते जाओ ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो ना, लाइक मल्टीप्लाई और समथिंग, और इसके जीरो बढ़ाते जाओ ना। नहीं बट मुझे वही तो नहीं करना है, बट मुझे वो भी करना है। ओ माय गॉड, मुझे 10 फ्रॉम n इक्वल्स, सॉरी 1 टिल 9, ओ वेट, 1 टिल 9 में गया i की रेंज में 10 से, फिर मैंने 10 को 100 किया, फिर मैं 1 से लेके n तक गया, ऑल द मीन वाइल चेकिंग द कंडीशन कि भाई आई इंटू जो नंबर है वो लेस देन, मतलब मेरा जो गिवन है एन उससे है कि नहीं, और काउंट प्लस प्लस करता गया। यही तो करना है मुझे। मेरे को डबल फॉर लूप लगाना चाहिए, बस काम खत्म है मेरा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ तब से। इंट आई इक्वल्स, आई नहीं, लेट्स से मल्टीपल, और what we can say, मल्टीप्लाई 10 से करना चाहिए, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मेरे को एक आउटर कर देना चाहिए, और यहाँ पर मेरे को मल्टीप्लाई लेस देन n रखना चाहिए, मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पे मेरे को फॉर लूप चलाना चाहिए, i इक्वल्स 1 से लेके i लेस देन n 9 तक, सॉरी लेस देन इक्वल टू 9 तक, प्लस if uh, I into multiply is less than n, count प्लस प्लस, यहाँ पर जो फाइनल काउंट आएगा, यहाँ पर मुझे n के लिए लिख लेना चाहिए, जो भी फाइनल काउंट आएगा n इक्वल्स 0, हमारे पास नहीं आने की कोई कंडीशन दी है, 1 से लेके इतना तक जाएगा, नहीं ये तो टेस्ट केस है, मतलब 1 से लेके उतना रहेगा, if count is sorry, n is less than n, then we can print dot println n less than 0, sorry 10 question mark, true, then print 9, else print 9 plus 9। यहाँ पर else break out, hmm, hmm,
हम्म, कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। अरे ग्रेट, लेस देन 10। 18 19 क्यों आ रहा है? 10 39 सही है, ये 18 19 क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा। इक्वल टू साइन भी लगेगा ना? अच्छा अच्छा। नहीं, तभी नहीं हुआ। तो दैट वुड हैव वर्कड, क्योंकि कुछ इशू आ गया। अब क्या इशू आया? ओके ओके, 18 19 ही आ रहा है। व्हाट कुड बी द इशू? इक्वल यहाँ पर भी रहेगा। इट कैन बी इक्वल टू, राइट? हो गया सही। All right, guys, I think this is it. This should work. Let me just delete these two files from here. Main तो है ही, एंड यहाँ पर मैं जाके मेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड होपफुली अपना काम हो जाएगा। हो तो जाना चाहिए, पर देखते हैं। टेस्ट केस वन, टेस्ट केस वन, टेस्ट केस वन। रॉन्ग आंसर। टेस्ट केस दिखाओगे भी क्या? ये जाके देखते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत हुई। कंपेयर क्या है भाई? अरे कंपेयर नहीं यार, मेरे को हैट्स क्या होता है? इनवैलिड इनपुट। बैठ जाओ बैठ जाओ, ये सब डेंजरस जगह मत लाया करो मुझे। ओके, क्या दिक्कत हुई होगी ऐसी? क्या दिक्कत कर दी होगी मैंने? हाँ यार, क्लाउड से ही पूछते हैं, थक गए भाई हम। पूरा दिन साला काम करो, फिर ये करना पड़ता। सैड लाइफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी तो चाहिए होगा। बोलेगा क्या भोंदू है भाई, ये भी नहीं कर पा रहा। स्पेस कहाँ करूँ मैं? अरे हटोगे नहीं? अ, क्या ही गलत कर दिया होगा मैंने इसमें? अनुभव सिंह बस्सी का स्टाइल। कॉन्टम्पलेटिंग, इसमें क्या अच्छा ठीक है भाई, मैंने तो सही आंसर लाया नहीं, तो तुम ही कर लो कॉन्टम्पलेट। देखो क्लॉड को भी टाइम लग रहा है भाई, देख भाई, तेरा लॉजिक ऑलमोस्ट सही है, लेकिन एक एज केस मिस हो रहा है। बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है। जब आई इंटू मल्टीप्लाई ग्रेटर देन एन होता है तो पूरी लूप ब्रेक कर देता है, बट नेक्स्ट मल्टीपल। अच्छा हाँ ना, दैट इज राइट, दैट इज एब्सोल्यूट। असली प्रॉब्लम ये है, अगर n इक्वल्स 100 होता तो ये काउंट 9 हो गया, मल्टीपल, फिर ये ब्रेक आउटर काउंट 10, करेक्ट 19 अगर तो। ठीक है यार, समझ गया। एक्चुअल बग फॉर इंटीजर ओवरफ्लो जब मल्टीप्लाई इससे तो। हाँ तब अगर n बहुत बड़ा होता, यहाँ से भी है, इंस्टेंस के लिए सही काम करता है। एक बार अपना कोड सैंपल इनपुट पे मैनुअली रन कर, क्या आउटपुट मिसमैच हो रहा है, कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है? तेरा कोड ये सही प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली कौन सा केस फेल हो सबमिशन पे, वो
आया डब्ल्यू ए आया टीएलई। अच्छा भैया चलो इसने हमको इनपुट तो दे दिया कुछ। अच्छा अच्छा, हमको पता चल जाएगा कहाँ हमने गलती करी है। आ, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। नहीं, 9 तो 18 ही आ रहा। एक मिनट, ये इसको हटाओ भाई, हटाओ भाई तुम। हाँ अभी आओ तुम। देखो भाई रन ही करता जा रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा है। तो इनपुट सही दिया। ओ यहाँ पे मैंने वो कर दिया ना क्या, उसका भी इशू नहीं है एक्चुअली, इशू है ओडी का। नहीं तो टीएलई बॉस, you are right. I think I should use long just to be safe. I should use long here, long, and I should multiply ये इसको empty रखते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, because multiply is storing such a big town. uh, I think I should use long. Also your English is pretty bad. Oh, sorry, English is pretty bad. So stick to English, I guess. English, I guess. Uh, Fair enough, I'll stick to English. But actually, int is not the TLE cause here. The real issue is T can be up to 10 to 4 and up to 9 and 9. Your solution is per test case already, so that is not it either. Is it? Oh yeah, it is actually. Yeah, pretty good. The culprit is out of flow. Actually, no. Let's look further. Actually, the solution is but the most likely issues is flushing problem or even simpler. Oh yeah, the issue is I'm getting this. I am getting this issue on my local setup. Uh, mm, 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 mm. Oh yeah, that's true. Oh, uh, create txt, did that, still did not get any response. I forgot to add these. Those are now added, and this is filled. Or the actual required response. Bro, I'm getting it. No, wait, I'm getting 9. Oh wait, oh. Those are correct outputs. No. First one क्या था इसका? 10 was the input, right? तो इसका expected output 9 क्यों? For this input, I got 10, 18, 19, and 54. Why did you write 9 instead of 10? Isn't 1 to 9 counted as, what was the name? Extremely wrong. That's extremely wrong, and then 10 is also wrong.
Why is it failing then if it is correct? Ah, paste the current code. Yeah, I'll do that. Current code, the screenshot. There you go. And I'll also paste. Okay, let's look at the hint. Yeah, there you go. La 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 la. Oh, yeah. It should be N, bruh. Oh my god, bruh. Oh my god, bruh. No, man. Come on. Ching chong. Ding dong. Ping pong. I fixed that earlier in my previous version of this code, but I forgot to fix it here, bruh. No. Okay, first let it work. Let it cook for a while, and then let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Did we achieve Nirvana? Did we achieve Nirvana? Did we achieve heaven? Did we achieve moksha? Or are we still stuck here just to suffer? Oh man, come on, man. Don't play with my feelings like that, man. Let's go, bitch! Sorry, guys. Last one. I'll finish this. Except lol. I hate when that happens. You know, I had that previous version of this code where I made that mistake and fixed it, but forgot to do it here. 24 years old, by the way, talking like this. Bro, he did not even acknowledge this. Oh my god. Claude, good one. You did not even acknowledge it. That's great. On to the next one. Yeah, you're right about that. On to the next one. Oh, what do we have? We have two permutations. Wait, I've seen this question. I think I've done this question. So no, no. I've seen two permutations. Two permutations. I have seen this somewhere. I don't know where, but I know it. I know it in my head. But I've seen it somewhere. What does it mean? It's extremely. I think I butchered extremely. Right. All good, all good. Two permutations. Two permutations. Let's hide that. Let's clear this. Let's bring back the good old days. Let's clear this as well. Let's clear this as well. Two permutations. Let's start the timer. There we go. You're given three integers n, a, and b. Determine if there exist two permutations p and q of length n for which the following conditions hold. The length of the longest common prefix of p and q is a.
The length of the longest common suffix of P and Q is P. A permutation of length n is an array containing each integer from 1 to n exactly once. For example, 2, 3, 1, 5, 4 is a permutation, but 1, 2, 2 is not a permutation. 2 appears twice in the array, and 1, 3, 4 is also not a permutation. N equals 3, but there is 4 in the array. Oh, okay. It's basically like, what is it exactly, basically? P and Q, there exists permutation P and Q of length n for which the following conditions hold. The longest length of the prefix of P and Q is A. Uh, Permutation of length n is an array containing each integer from 1 to n exactly once. Is not permutation, is also not permutation, but there is 4 in the array. Okay, so it's basically like if you are given, say, this, right, where your n is equals to 5. So this is a permutation of length n, right? Now we are also given two other integers, a and b. A represents the longest common prefix of P and Q. So this is one permutation of n, say P. We have one another permutation, permutation, which might be something like this. Any jumble assortments, because the only requirement for a valid permutation is that no duplicate should be there, which neither of these P and Q arrays have. And the second requirement is that uh, n, which is 5, there should be no number which is greater than, n. So when these two conditions are met, that is a valid permutation. So now in this P and Q, we need to find the length of the longest common prefix of P and Q, which is A. Longest common prefix. Longest common prefix. I have prefixes like you start from the start. So like, do we have something in common here? And then longest common suffix, which is this. So what is the question really? For each test case, if such a pair exists, output yes, otherwise output no. Okay. 1 1 1 always yes. 1 2 1 no. 3 1 1 no. 4 1 1 yes. 1 2 3 4 and 1 3 2 4 form a valid pair where 1 is common prefix and then what the fuck is, okay, 4 is the common, and yeah, it satisfies. Okay. Yeah, I don't know. How do we solve this? Uh, let's see. We are to find the suffix and prefix part is pretty easy, to be honest. Uh, we just need to find the substring, I mean, not even the substring. We just need to compare, and if we have even one common element from the start, we can say this is true.
and one common element from the end, then we can say this is true. When both of these are true, we return true, else return false. That is an easy thing to do. The only not easy thing to do is like how do we generate this P and Q? Uh, yeah, this is a good question. I mean, think about it. Why would there be a permutation in which we will generate duplicates or we will have and so this is jargon. We need to think about that. I think we need to focus more on A and B here. Uh, and we need to figure out if in what scenario will they be equal or will there be a possibility of it being equal for the for like basically I'm saying is that we need to figure out if this and this so in what scenarios will we get a true here and a true here. uh, so like we can always generate permutations where it's jumbled 1 3 2 and then 1 2 3. These are different permutations, right? Where one is present, so prefix is true, but the end will always mismatch, so suffix will not be true. And it also depends on A and B, right? If B is 0, A is 1, then this is true, so we will return true for this. But if B is 1, then we will return false. So it depends on, to be honest, yeah, it just depends on the n. If the n is huge enough, and then it depends on AB. Can we accommodate these in a permutation? So if we have four elements, if we have one element, if we have one element and we have A and B, then it will always be true because both A and B, the single element will always be the prefix and the suffix. If we have two elements, it is impossible to have the same prefix and the same suffix. Not possible. The 3 one we also saw, not possible. Uh, 4, yes, possible. But then again, it depends. If A is 1, B is 2, then it will not be possible, right? Because 1 2 3 4, 1 3 2 4, B is 2, so we need a suffix, but it will always enter. There won't be enough middle elements that we could jumble to get a new valid permutation without violating this. So, uh, what we actually need to ensure is that this is, I think, a one-liner maybe. Uh, what we actually need to ensure is that after taking the length of A and B from N, do we have enough? Like if this is more, if this is 2, then yes, we can do it. Or if it is less than 2, then we can't do it because we can jumble X and Y. I mean, I'm talking about these two. We can always take these two and we can jumble it, right? We can jumble it. But if we don't do it, if we don't have two, or if let's say we just have one middle element left, then we can't, right, without touching the boundary of the prefix or the suffix. So like without touching the boundary of the prefix or the suffix, we cannot jumble
uh, or create valid perm, right? So I think what we need to actually calculate is that we need to just check if let's take the inputs n is equals to f order next n and a is equals to f order next n and p is equals to f order next n. If a plus b, if a plus b minus n, wait, n is greater, right? So yeah, n minus a plus b is greater or equal to 2, and then yes, else it's not possible. Let's see. Let's see if it works. Oopsie daisy. Oopsie daisy again. Just fix that. Okay. No, 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 no. Yes. Okay. Yeah, this case is a bit different. Uh, just put that in another. Should I? Is equals to 1. If n is equals to 1, that's a base case, right? 411 works. Can you give me let me ask Cloud to generate some tough test cases. Can you generate test cases for this problem? Alright, let me just fix that. If n is equals to 1 and then a is equals to 1 and then b is equals to 1, then else this block and yeah, there we go. It's good. Let's see what it generated. Let's see. All right. Okay, I think I am not doing so great here. Yes, no, no, yes, 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 yes. Okay, there are a lot of yeses. There are a lot of no's here. My yeah. Oh, okay. So yeah, basically, instead of general, this is a very bad habit of mine that I have. Instead of being very, very specific to that edge case, I should have thought of like uh, what is that particular thing trying to tell me, right? So wait, how do I fix the indentation? Yeah, so I should have thought of
Wait, so it's failing when all of those are equal, right? Because if those are equal, my this theory fails completely. Because it will always be yes in that scenario because prefix is always equal to suffix. And so yeah, that thing I missed, which is fine. I think I did say that prefix will always be equal to suffix if A is always equal to B, right? Sorry, if A is equals to N and B is always equals to N. I did say that back when I was writing it, yeah, on the Excalibur, but yeah, missed it and code. It's fine. I think it should work now. No, it doesn't work. This still doesn't. Uh, no person exactly. Uh, Bruh. You know what? Let's just test it on code forces instead of testing it on plot. It's eating up free tokens. Main.java. Yeah. Submit. Let's see. Let us see. Those are, uh, let's go, guys. Great one. Good problem. Literally like 9, 9 what? Uh, Never mind. 9 code LOC long, but yeah, that was a good problem. That was definitely a good problem. Uh, so with that, I think we are done with the 800 series. Now we're gonna take it up a notch into the 900. But that's all I have for you guys for today. I am exhausted and uh, I want to actually do this.